ladies and gentlemen, for joining us back. Move towards our next speaker. I would like to introduce our next speaker, Professor Dr. Rizwan Khan. In the year 2013, he was conferred with PhD degree in Artificial Intelligence from Lord Bernard University, London, France, an institution renowned for its excellence in research and innovation. Dr. Khan further on his expertise as a postdoc research fellow for 3 years at Computer Science Laboratory in Image and Information Systems in Lyon, France. Since 2019, he has been serving as a professor and dean of faculty of Information Technology at SIREN University in Karachi, Pakistan. For 2 consecutive years, Dr. Khan has received the distinguished honor of being selected by the European Commission as an invited professor at University Jean Monnet Saint-Etienne, France. Dr. Khan's research interests include machine learning, computer vision, medical image analysis, explainable AI, and human perception. Now I request Professor Dr. Rizwan to please come and present his work. Okay, Assalamu alaikum. It's always hard to have a session after lunch, especially if coffee bina mili. So I can see some sleepy faces. But I'll try to make it as interesting as possible. Actually, the idea of my presentation is to demystify some of the terms that we hear. जैसे भी आप डॉक्टर साहब से सुन रहे थे, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, स्पेशली जब हम एक इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन में काम करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर साथ मिलके, तो हमारी लैंग्वेज एक नहीं होती यूजुअली. एंड दिस इज व्हाट वी हैव फेल्ट व्हेन वी डिड सम प्रोजेक्ट रिगार्डिंग ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिटेक्शन. तो अंदाजा ये हुआ कि वी शुड हैव सम कॉमन लिंगो, एटलीस्ट कुछ बेसिक आइडिया हम लोगों को नहीं होता कि वो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, और जब हम उनको कहते हैं कि हम डीप लर्निंग अप्लाई करनी थी तो हमारी शक्ल देख रहे होते हैं ये क्या कह रहे हैं. So I'll try to demystify some of the terms, and I'll show at the end some of research projects जो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में किए हैं. Probably they will be interesting for you guys. Okay, so I'll start with my biographic sketch. So by training, I am a computer systems engineer from UIT Mehran. Then I did masters from NUST Islamabad. Before moving to France, actually I'm Erasmus Mundus Scholarship Fellow. Before moving there, I was working in NESCOM in Islamabad for 4 years. Then I got this scholarship, moved to France. So I did Erasmus Mundus case, it's a mobility program. So I spent 1 year in France and 1 year in Norway. So I did my master's from there. Then I moved to Lyon, which is third largest city in France. I did my PhD over there. Postdoctorate was also from Lyon, but from engineering school. And I spent 6 months in Gjøvik, Norway, as postdoctoral fellow as well. And since 2017, after spending almost a decade in Europe, I came back to Pakistan. And since then, I'm serving Salim Habib University. And from 2019, I'm serving as dean and professor over there. Okay, just to motivate the talk, I have few numbers for you guys. So medical data is, आजकल कहते हैं कि जिस कंपनी के पास डेटा है वो सबसे बड़ी कंपनी है. So Meta is big because they have the data. Google is big because they have all of our data. Right? From in 2010, it took 2.5 years to double the data. But now in 2020, it takes only 73 days to double medical. I am only talking about medical data. इसके अंदर EMR डेटा भी है, आपका मेडिकल इमेजिंग का भी है, रिपोर्ट्स का भी है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स जितनी भी हैं. So it's only 73 days now. So think about the volume of data that we are producing and saving.
पहले हमारे पास बिग डेटा का कॉन्सेप्ट नहीं था, सो यूजली वी यूज टू वेस्ट डेटा समटाइम्स अगर सेव नहीं होता था, बट नाउ इट इज ओनली 73 डेज, तो आपका डेटा डबल हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. 5,600 medical journals producing 800,000 articles annually. 800,000 articles only in medical imaging. And depth of information in radiological report is more than जो आपके वो येलो पेजेस हुआ करते थे एक जमाने में, जो न्यूयॉर्क की टेलीफोन डायरेक्टरी है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पैथोलॉजिकल डेटा के अंदर है, सिर्फ एक इमेज के अंदर. So think about the data we are dealing with. अच्छा, अभी डेटा पे आते हैं, बिकॉज डेटा वी नीड डेटा टू ट्रेन डीप लर्निंग मॉडल्स. इफ यू डोंट हैव डीप लर्निंग तो ये डेटा सारा बेकार है, राइट? एंड इफ यू डोंट हैव द डेटा तो डीप लर्निंग बेकार है, कुछ हो नहीं सकता. बट प्रोफेशनल नाउ हैंडल 50,000 इमेजेस पर 12 आवर शिफ्ट. ये डॉक्टर्स के लिए है, रेडियोलॉजिकल डेटा है. ये डेटा मैंने GE हेल्थ केयर से उठाया हुआ, ये उनकी एक रिपोर्ट से डेटा मैंने लिया हुआ. A significant jump from 500 images 15 years ago. So think about the data these doctors are dealing with. अच्छा, जब डेटा ज्यादा है तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, so there are more chances of inducing error, right? और एरर की परसेंटेज कुछ यहाँ पर मैंने शो की हुई है. An estimated 40 million medical errors occur annually worldwide. अच्छा, इसमें सारे fatal error नहीं है, छोटे errors भी हैं, but think about 40 million medical errors. Okay. And up to 350,000 patients only in Europe die because of wrong diagnosis. It's almost about a small city. In Europe, usually cities are very small. So annually 350,000 people are dying because they don't have time or they don't have enough doctors to do this. क्योंकि इसका सारा एक इशू आ रहा है कि आपके पास एक तो डेटा बहुत ज्यादा होता जा रहा है और प्रोफेशनल्स कम होते जा रहे हैं. सेकेंड थिंग जो एक और इशू आपका आ रहा है इज द शॉर्टफॉल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. ठीक है, प्रोजेक्टेड escalation by 2035. This is as per GE healthcare report. 14 million healthcare workers will be more needed to 2035, जो कि शॉर्टेज होगी. और उसका रीजन क्या है? यंग प्रोफेशनल या तो ऑप्ट नहीं कर रहे हैं और दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री टू गेन मोर फाइनेंशियल गेन्स. सो AI क्या कर सकता है? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ प्रॉब्लम कि हम किस स्केल ऑफ प्रॉब्लम को डील करना चाह रहे हैं या किसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. अच्छा, AI को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? दीज आर फ्यू आइडियाज. दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, यू कैन ऐड मोर. जो मुझे लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई हैव पुट सम ऑफ देम ऑन द स्लाइड्स. वी कैन ऑटोमेट सम रूटीन टास्क. जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं दे अंडरस्टैंड कि फाइबर बहुत ज्यादा होता है. अभी सर कुछ पूछ भी रहे थे मेडिको लीगल के हवाले से, सो प्रॉब्ली यू अंडरस्टैंड कि फाइबर कितना करते हैं और शायद ये रिपीटेटिव टास्क हैं. क्या हम इनको ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी? इट्स अ क्वेश्चन. प्रॉब्ली आई से यस, हम कर सकते हैं. तो वो जो टाइम बचेगा, दिस मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन यूज दैट ऑन दैट टाइम ऑन दिस क्रिएटिव टास्क जहां पर मशीन्स नहीं हैं. सेकेंड थिंग, वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट्स. कैन वी यूज चैटबॉट्स इन हॉस्पिटल? स्पेशली आपने देखा होगा कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, यूजली कॉल. क्या ये ऑटोमेट नहीं हो सकता? आई थिंक इज द इजीएस्ट टास्क टू ऑटोमेट. ये चैटबॉट्स आपकी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, डॉक्टर का स्केड्यूल उनके पास हो, पेशेंट जस्ट आइदर बाय टॉकिंग और बाय राइटिंग एंड दे हैव दिस मीटिंग सेटअप. इसके अलावा क्या हो सकता है? रिमोट मॉनिटरिंग हो सकती है. इन्फ्लुएंजा के लिए, बीमारी के लिए क्या जाना जरूरी है? और कैन यू राइट some symptoms and this medical chatbot can give you some answers. So again, doctor's time will be used for specific tasks. Decision support system. जो भी सर बात कर रहे थे, usually that comes under decision support system. So we are not trying to replace any doctor or medical practitioner, but technology is going to augment the skills of medical practitioner.
ये हमेशा प्रॉब्लम होता है जब हम लोगों से बात करते हैं से ओके मशीन तो हमें रिप्लेस कर देंगे. आई थिंक ये रिप्लेस नहीं होने वाली इतनी जल्दी. हाँ, कुछ छोटे टास्क रिप्लेस हो सकते हैं जहाँ पर, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं, AI is going to augment the skills of medical practitioners, not going to replace, at least in near future. Training and education. आपके पास जो हॉस्पिटल से सर डाउ के और लोग भी हैं, आगा खान की कुछ हैं, आई डोंट नो. We have specialized simulators, especially medical training के अंदर. You need either patients. आप पेशेंट्स की जरूरत नहीं है कि आप किसी पेशेंट का पहले गलत नीडल लगाएं और उसको देखें कि यार नीडल गलत लग रही है. यू हैव द सिमुलेटर्स, राइट? सो AI is going to help over there. They can give specialized reports. आगा खान में एक्चुअली वी विजिटेड 2 months बैक. दे हैव द सिमुलेटर. तो वहाँ पे अगर वो पेशेंट की तरह का वो एक डमी है, सो इफ यू जस्ट प्रिक इन द रॉन्ग प्लेस तो एक आवाज भी आती है कि आपने गलत प्रिक किया. So that is the thing. So AI technology is going to help over there as well. So शायद टीचर्स की डिमांड को कम कर सकते हैं, एंड दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर अगेन कैन गो टुवर्ड्स स्पेशलाइज्ड फील्ड्स. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये कुछ को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ है, लेकिन प्रेडिक्टिव एनालिसिस है. EMR का आप लोगों को अंदाजा है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स. एक्चुअली इसमें कुछ एथिकल इश्यूज हैं, बट द थिंग इज दैट आवर डेटा इज विद द हॉस्पिटल. If you go to Aga Khan every 6 months for checkup or for medical reports, jati usually, so they have your data of 2 to 3 years, 4 years, 5 years. उन्होंने तो आपको रिपोर्ट दे दी है, you are done. But they can run predictive analytics on your data, and after 5 years they can say कि इस आदमी को, इस patient को, we can say with some probability that this disease is going to happen. आपने वो रिपोर्ट डिमांड नहीं की, but the system knows that. Now the issue is, इसमें ethical issue आ जाता है. Should that system alarm that person or not? मतलब हमें नहीं पता, because this is something we work on project and there is no legal framework to support this. So ये kind of no-go area, but I know that lot of companies in Europe are using that data for predictive analysis. ठीक है, वो बताते नहीं, but they know कि probability of having this disease after 10 years is this much from your data. जी sir. I'm sorry sir, but whatever goes in favor of patient, अगर किसी को हम predict कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसमें illegal कोई चीज नहीं है. Should be legalized. Sir, this is your point of view. आपने रिपोर्ट सिर्फ मांगी ब्लड सीपी की, और आपको सीपी मिल गई है. नहीं, लेकिन साइमल्टेनियसली उसने इंडिकेट किया कि चांसेस है कि नेक्स्ट 6 months में ये तो बहुत अच्छा. But sir, this can also raise a psychological pressure to the patient. चलिए ठीक है, बट बेनिफिशियरी तो होगा. बेनिफिशियरी हो सकता है. लेकिन अगर नहीं हुआ, एक्चुअली इसमें सर इशू ये है कि इफ पॉलिटिशियंस की बात हो रही थी, सो वो एग्जांपल को अगर मैं कैरी करूँ, आपको पता चल जाए कि आपका सदर 1 साल बाद क्या कंक्रीटली ऐसे बताओ ना, ये तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी. इसमें डेटा प्राइवेसी का इशू भी है. यूरोप में एक लॉ GDPR कहते हैं, तो जिन आप तो मेडिकल लीगल के GDPR के अंदर क्लॉज है एनोनिमिटी, सो यू कैन नॉट डिस्क्लोज दैट. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टफ. आई एम सॉरी, मैं डिस्ट्रैक्ट आपको कर रहा हूँ. शुरू में भी आपने कहा था कि अगर ये हमें जो हम राइटिंग करते हैं उसमें टाइम्स लग जाते हैं. हमारे यहाँ ये होता है कि हम पहले किसी इंजर्ड पेशेंट को देखा और उसकी रिपोर्ट बनाने में सम टाइम वी टेक टू कंज्यूम 2 days, 3 days, 1 week. और ये वो टाइम होते हैं जब हम करप्शन हो जाती है. अगर हम नाउ एंड देन उसको रिपोर्ट कर देंगे तो ये जो प्रेशर आता है किसी पॉलिटिकल लीडर का, 90% ऑफ करप्शन कैन बी चेक है. और एस्पेक्ट है. आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑटोमेटिंग, तो आप उसका एक अलग एस्पेक्ट है. It's very fair. Where is the yes? It's a very good. Okay, sir. Thank you. Sorry. No, sir. Perfectly fine. Okay, so ये जो मेरी स्लाइड्स थी जस्ट टू आपको एक मोटिवेशन देना कि वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर AI कैन हेल्प अस. डेटा कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की शॉर्टेज है, एंड AI इज देयर टू हेल्प यू. So this is just the motivation of the talk.
अच्छा, AI इज रियलिटी और हाइप, आई थिंक इसमें तो कोई ये कहने वाला नहीं है कि हाइप है, लेकिन हाइप अभी थोड़ा सा जब आप ब्लॉग्स पढ़ते हैं, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी रिपोर्ट हो रही होती हैं जो लगता है कि अभी प्रैक्टिकलिटी नहीं है ये, लेकिन हमारी मीडिया को तो एक स्पाइसी न्यूज़ चाहिए होती है तो वो चला देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज हैं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डीमिस्टिफाई दैट थिंग. अच्छा, AI इसको जस्ट अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये एक ब्रेन क्या आपको यहाँ पर, सॉरी, ये न्यूरल नेटवर्क है, नेचुरल ब्रेन का. डीप लर्निंग इज न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, राइट. तो इसमें आपको कुछ न्यूरॉन्स फायर होते हुए नजर आ रहे हैं. In our brain we have 100 billion neurons, and from the beginning of human history, अगर आप novels पढ़ें, so humans have dreamt of creating artificial beings like us. So AI is not new. AI is something that dates back to Plato's era. जब वो बात करते हैं कि what is intelligence? Intelligence होती क्या है? And how to define it? And still, when you go through different books, different texts, you don't find one definition of what is artificial intelligence. Because intelligence has many aspects. And to replicate, to mimic, it's very difficult. So this is just to show कि हम अभी तक अपने ब्रेन को 10% समझ सकें. We are not sure how our brain works. How these neurons fire, इनकी connectivity strong और weak क्यों होती है? But even by understanding 10% of it, we are able to do whatever we are doing these days. तो अगर हम अपने ब्रेन को और शायद उसको डिटेल में पढ़ पाएं, although it's very difficult, probably this AI will go more forward. So this is just an illustration. अच्छा, AI, I don't know कि सुबह की टॉक्स में आप लोगों ने कुछ AI का ये बेसिक आइडिया लिया था. If we have some students, they will love it. AI को अगर if I ask you कि AI ये जो ब्रांच है किस फील्ड की है, लाइक दिस इज नॉलेज ट्री, जो मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि दिस इज नॉलेज ट्री. सो इसकी रूट्स में आपकी सारी बेसिक साइंसेज हैं, एंड दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. यू कैन ऐड, कीप ऑन एडिंग मोर, जो हम शुरू से पढ़ते हुए आते हैं. देन ऑन टॉप ऑफ इट वी ट्राई टू बिल्ड कंप्यूटेशनल मॉडल्स. ये साइंस की, इंजीनियरिंग की अप्रोच है. यू ऑलवेज ट्राई टू मेक इट, इसको कंप्यूटेशनली कैसे कर सकते हैं. अभी तक इसको इंटेलिजेंस नहीं है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू मिमिक के हो क्या रहा. And if we try to induce intelligence, अच्छा, intelligence, can someone give me just one liner? What is intelligence? Decide what is wrong or what is right. Okay, yes, correct. For me, intelligence is the ability to make decisions. तो जो आप कह रहे थे, right or wrong. So this is the ability to make decisions. That is intelligence. Easiest definition of intelligence. And this is what artificial intelligence do. It makes decision on the data. That's it. Right, so we build computational model. On top of it, we try to induce intelligence. अच्छा, AI की जब बात करते हैं, AI is like philosophy. जब हम अपनी PhD start करते हैं AI में, usually the first paper that was given by my professor was from the field of neuroscience. So from coming from engineering and giving the person giving me paper from neuroscience was a big shock. But later on we understand कि AI तो कुछ नहीं, ये तो सारा ही नहीं से रहा है, क्योंकि मेरी perception में PhD थी. So we need to understand human visual system कि वो कैसे काम करता है, perception क्या होती है, ये terms कभी सुना नहीं थे. So again, this is more philosophy. Machine learning is purely a science approach. AI is top down. AI starts with the idea of producing human-like machines. बहुत बड़ा task है. Machine learning is bottom up. वो कहते हैं सारे टास्क को डिवाइड कर दो, विजुअल सिस्टम को डिवाइड कर दो, इट बिकम्स कंप्यूटर विजन. ऑडिटरी सिस्टम को अलग कर दो, हमारी NLP जो लैंग्वेज वाली है उसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं. तो हमारे इंटेलिजेंस के जितने टास्क है ना, ML उसको सॉल्व करता है सेपरेटली. एंड उसका आइडिया है कि जब ये सब टास्क सॉल्व हो जाएंगे देन वी विल हैव AI. सो AI इज बॉटम अप, ML इज टॉप डाउन. नहीं, बॉटम अप ये है, AI इज, ठीक है. सो थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंशिएशन है. अच्छा, लेकिन आप जब मीडिया में सुनते हैं तो AI होता है, सिर्फ AI, ML की बात नहीं होती. एंड इफ यू वांट टू गेट फंडिंग तो कंपनी में AI जरूर आना चाहिए. आपकी डोमेन पे .ai पे होनी चाहिए, ठीक है. सब कंपनीज की डोमेन पे .ai पे, क्योंकि फंडर्स जितने भी आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनको ML का नहीं पता, दे लव AI का, तो AI बिकता है. ओके,
एंड मशीन लर्निंग के बाद जो लास्ट चीज है दैट इज डीप लर्निंग. सो उसमें भी बात करते हैं कि डीप लर्निंग क्या है. सो AI अगेन इज टॉप डाउन, मशीन लर्निंग इज बॉटम अप, और डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ ML जिसमें हम ह्यूमन ब्रेन को इम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं. अदरवाइज मशीन लर्निंग के बहुत सारे टूल्स और हैं. अगर आज से हम 10 साल पहले ये कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो शायद हम SVM की बात कर रहे होते, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफायर हुआ करता था, या हम डिसीजन ट्री की बात कर रहे होते, या कोई और नाइस बेस क्लासिफायर की बात कर रहे होते. क्योंकि 2011 में हमें ये पता चला कि डीप लर्निंग में ट्रेनिंग कैसे होगी. हमें कंप्यूटेशनली डेरिवेटिव लेना नहीं आते थे, जो यहाँ पे कुछ मैथमेटिशियंस बैठे हैं. तो बाद में पता चला कि यार ये डेरिवेटिव लिए कैसे जाएंगे कंप्यूटेशनली. देन दिस फील्ड ऑफ डीप लर्निंग के ओके. अच्छा, आपने कितने लोग अभी भी एग्री करते हैं कि मशीन्स विल रिप्लेस ह्यूमंस? मोहन, कोई भी साइंस फिक्शन मूवीज नहीं देखता. टर्मिनेटर वाले दौर के, हम तो टर्मिनेटर वाले दौर के हैं. आर्नल्ड आया था, उसने कहा बस हो गया. ऑपरेट तो अल्टीमेटली ह्यूमन ही करेगा, राइट. रिप्लेस फिर भी कंप्लीटली नहीं हो लेकिन सकता. हाइप आजकल क्या है? हाँ, ये है बिल्कुल. डॉक्टर्स में भी ये मिथ है कि हम शायद रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए ये डॉक्टर्स में नहीं है, ये बहुत सारी जगह है. लेकिन डॉक्टर तो आपकी हेल्प नहीं करते. उसका एक रीजन ये भी है कि शायद हमें रिप्लेस कर देगी ना मशीन. ये भी एक रीजन है इसका. असल में जो हाइप है ना, वो वाली टर्म यानी कि AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जब हम कहते हैं, सो वी ट्राई टू थिंक ऑफ अ मशीन दैट इज गोइंग टू रिप्लेस, या वो मशीन ह्यूमनली जितने हम टास्क करते हैं सब में इंसान को बीट कर देगी. So that is AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो वो रोबोकॉप मूवी में या वो टर्मिनेटर में आया था. लॉस्ट इन स्पेस है, उसमें यही है. ओके, देखता नहीं तो कैसे बैठे हैं. वो उसमें रोबोट्स कर रहे हैं रिप्लेस. ओके, सो ये थोड़ी सी मिथ है भी. ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि कोई आपको रिप्लेस कर देगा, या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एक मशीन आएगी जो आपको सब टास्क में बीट कर देगी, तो दैट इज अ मिथ. अच्छा, ये टास्क में कह रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि टास्क का क्या मतलब. अभी डॉक्टर साहब ने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई थी, वो सारी मशीन एक टास्क कर रही थी. वो जितने भी एग्जांपल थे उसमें एक टास्क हो रहा था. पर्सन आइडेंटिफिकेशन, ट्रेजेक्टरी को देख रहा है, अगर मेडिकल क्या तो बता रहा है डिजीज है या नहीं है. इंसान कितने टास्क करता है? मतलब फ्रॉम डेली अगर आप सोचे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप सोते हैं, हमने टास्क भी परफॉर्म. अगर मशीन आपको एक टास्क में बीट भी कर रही है एक्यूरेसी में, बट अगर 99% तो आप मशीन से बेहतर है. तो अभी तक हमारे पास जितने सिस्टम हैं, यूजुअली दे आर गुड इन 1 or 2 टास्क. ठीक है, सब टास्क में नहीं. सो इफ वी हैव अ मशीन दैट बीट्स यू और बीट्स ह्यूमन इन एवरी टास्क, दैट इज AGI, दैट इज द हाइप. बट राइट नाउ ये हाइप है. ठीक है, ये आप ये लगता है कि ये हो जाएगा. लेकिन आजकल हम जितना भी रिसर्च में काम करते हैं, थोड़ा जनरेटिव AI इज गोइंग टुवर्ड्स AGI, बट यूजुअली जो काम हो रहा है दैट इज इन ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. सो वी आर बिल्डिंग मशीन्स दैट आर गुड इन 1 टास्क, नॉट इन ऑल द टास्क. तो हम एक डेटा सेट लेते हैं, उसमें ट्रेन करते हैं मशीन को. वो चाइना में भी एक्सपेरिमेंट भी होता है कि रेडियोलॉजिस्ट से बेहतर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन मशीन ने की थी, बट दैट मशीन इज गुड ओनली फॉर 1 टास्क. So that is ANI and that is reality. So AGI is kind of high, ANI is reality. अच्छा, these are some of the projects जो मैंने अभी की. अच्छा, इसमें मेडिकल वाले में भी बाद में आता हूँ. इसमें कुछ मेरे PhD जी सर. सर जो चाइना वाली बात कर रहे हैं आप, वो असल में भी रेकग्निशन मॉडल बना रहे थे फॉर ड्रग प्रोसार्ट पीस. और वो उसमें इतना अच्छा ट्रेनिंग हो गई थी उसकी कि एक सर्टेन टाइप ऑफ ह्यूमन रेकग्निशन सी हो गई. एक सर्टेन टाइप ऑफ ट्यूमर. सो एक टास्क का भी सब टास्क था. ओके, सो अगेन दैट इज ANI कह रहा हूँ. अच्छा, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं नॉट रिलेटेड टू हेल्थ टेक. हेल्थ टेक पे मैं भी आता हूँ क्योंकि मेरे PhD पोस्ट डॉक्टरेट कंप्यूटर विजन के सर ने कुछ दिखा दिए हैं. सो प्रॉब्ली आई डोंट नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट, बट जो भी चीज़ आपको समझानी है कि इमेज क्या चीज़ है, इमेज डेटा क्या होता है, और डीप लर्निंग में नेटवर्क की ट्रेनिंग कैसे होती है. दिस इज द जो मैं सोच के आया कि आप लोगों को थोड़ा सा जो आज मैं 1 घंटे में कुछ सिखा सकूँ वो ये चीज़ होगी. सो आई एम गोइंग टू स्किप सम ऑफ इट. अच्छा, जो एक इसका ये वाला जो आपका है, दिस इज समथिंग यू डू एवरी डे इन आईफोन. ये बायोमेट्रिक्स का है. सो यू हैव फेस में हम कहते हैं कि 64 पॉइंट्स होते हैं, जिससे आप किसी भी शख्स को, इस वक्त पॉपुलेशन 7 to 8 बिलियन है,
But if these 64 points इनमें meshes बनते हैं actually. So 64 points से meshes बनते हैं and they are specific for every person. So based on this 64 points, we can identify some person और ये जो आप face को phone को unlock करते हैं उससे होता है आपको नजर नहीं आता back ये चीज हो रही है. Okay, let me move forward. अच्छा ये कंप्यूटर विजन जहां पर भी लिखा हुआ है कंप्यूटर विजन का मतलब है इमेज डेटा अप्लाइड जिसमें इंटेलिजेंस आएगी. So input modality is your either image or video. Video is also image with certain frames per second. And then on top of it, some machine learning system is trained, and based on that, we are giving some decision. So computer vision का मतलब है machine learning plus image. Simply. अच्छा आज का जो latest trend है that is generative AI. Generative AI is we are generating data that is not in training, but exactly same as training. So आप डेटा की probability distribution को learn करते हैं और उससे आप डेटा को produce करते हैं. तो इसके कुछ examples हैं. Greetings, I am Professor Dr. Rizwan, the Dean of the Faculty of Information Technology, the department. Okay, so this video is generated using one image. ये वीडियो फेक है. मेरी वीडियो मैंने सिर्फ इसको अपना इमेज दिया था and I wrote the script. And this video was created. So in marketing, you can do something like this. So again, ये artificially generated video. Ready to create a dynamic AI-powered avatar? Let's make it happen with Midjourney, HeyGen, and ChatGPT. First stop, Midjourney. Design your avatar. Adjust, experiment until you're thrilled with the result. Got your avatar? Time for HeyGen.com. Navigate to the talking photo section and upload your avatar. Ready to make your avatar talk? Tap plus on your new avatar and it's time for a script. But wait, no need for the writer's block. Head over to ChatGPT and generate a script that suits your avatar. Copy it over, click submit, and boom. Your custom AI avatar is ready to speak for you in your marketing videos. Talk about hassle-free and stunning avatars in minutes. Remember, with AI, your creative possibilities are endless. Stay curious, stay ambitious, and let's ignite. Image generation models have taken the world by storm. It's now possible for anyone to turn their ideas into images using nothing but words. The explosion of creativity these models unleashed was years in the making. In 2021, Runway introduced latent diffusion, an AI system that was able to generate realistic images using an improved image generation technique. And in 2022, Stable Diffusion, a further improved version of latent diffusion that caused a tidal wave of creativity and mass adoption of the technology. Today, Runway is excited to introduce the next step forward in generative AI, Gen 1, a video generation AI system that can efficiently generate video in any style, all while retaining quality and flexibility. Gen 1 is able to realistically and consistently apply the composition and style of an image or text prompt to the target video, allowing you to generate new video content using an existing video. We call this approach video to video, and we're incredibly excited to share a few early use cases. Stylization mode. Transfer the style of any image or prompt to every frame of your video. Storyboard mode. Turn mockups into fully stylized and animated renders. Mask mode. Isolate subjects in your video and modify them with simple text prompts. Render mode. Turn untextured renders into realistic outputs by applying an input image or prompt. And customization mode. Unleash the full power of Gen 1 by customizing the model for even higher fidelity results. Gen 1. Okay. ये वीडियो तो लॉन्ग है and I need to finish. अच्छा जो लोग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं स्पेशली मेडिकल डेटा में we always face shortage of data. क्योंकि usually hospitals they don't give their data until unless you have very powerful MOUs with them. For last 5 years I'm trying to get data from Avahan but I'm not getting it. But you can generate data, although this is not good idea. Doctors की जब तक आपका data set verified now machine learning projects में usually use नहीं कर सकते. But just to test, there is something called SORA, SORA probably you know. You can generate data. अच्छा GANs की field को नहीं है. This is GA and पिछले लोगों को अंदाज़ यहाँ पे कोई machine learning के students हैं? Okay, so at the back. So you can, this is GANs. So you can generate your data and then use it. अगर आपके पास data की shortage है, so you can generate artificially that data that looks realistic.
अगर आपके पास कोई डॉक्टर्स है तो उससे वैलिडेशन भी करवा लें एंड देन यू कैन यूज दिस. सो दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल जो शायद पहले नहीं था. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, ये एआई के हेल्थ केयर में कोई यूज केसेस हैं. स्पेशली आई वांट टू शो दिस वीडियो क्योंकि दिस इज ऑल कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस ही मैं प्ले कर रहा हूँ. Michael Deaver has been awaiting a lung transplant at the University of Florida Health Center since December. On what you call high flow air. And because of that, I can't sustain myself at home. A dedicated team of doctors and nurses attend to him day and night. But that's not all. Sensors and cameras track Dieter's every move in this smart intensive care unit, from vital signs to facial expressions and everything in between. Every place in this room will sense something about you. Is this enough light? Is this enough noise? Are you okay? Are you moving enough? Are you in your bed? Are you out of the bed? I think that's the future of how we will design hospitals. More than 350 gigabytes of information per patient goes into a central computer, where artificial intelligence then processes the data. So we can look at the patient and go, they're moving a lot. There's something going on there. Or their face has a certain grimace that they normally have. Is it possible that it could tell you before I even know that I'm having a problem? Yes, 100%. We will be able to decipher complex features, complex emotions like education or hunger. Funded by the National Institutes of Health, the high-tech experiment enters its third year. Researchers are still teaching the technology what certain actions like sitting and standing might indicate. The hope that AI will soon be able to provide real-time healthcare recommendations. Nurses, doctors, we spend a considerable amount of time paperwork, translating the data we get. We will actually have representation of the data in a way that you as a human can just understand action. But will this new technology replace the need for humans in the hospital altogether? There are very simplistic models compared to what our brains are doing. And I don't think that we should be worried about humans being replaced anytime soon. What this technology does, take big burden off the physicians and nurses and provide them time to actually engage what we are here for, taking care of the patients. A new holistic approach to healthcare, where humans and computers work hand in hand. Dr. John Torres, NBC News, Gainesville. Okay, इसमें कुछ कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन नजर आ रही थी. So first is पेशेंट को ट्रैक कर रहे थे. Secondly, उसमें वो देख रहे थे कि वो क्या अनकंफर्टेबल है, कंफर्ट कितना मूव कर रहा है. So based on that, they were trying to identify को डैशबोर्ड पे कुछ ना कुछ आ रहा होगा कि कोई प्रॉब्लम है पेशेंट के साथ. All again, there is a camera looking at the patient, and the system behind that is trained to monitor the patient, is giving that kind of decisions जो कि डैशबोर्ड पे आ रहे हैं. So there is no need of nurse looking at the patient all the time. उसके बाद इन्होंने कहा कि you can automate the report generations जो at the end में वो कह रहे थे. So AI can help, it can augment, but it's not going to replace. जो इस वीडियो का भी एक मैसेज था. अच्छा, इसके अलावा आपको इधर this is what I did. ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था during my post doctorate. That was pain detection. That was funded by a hospital in Lyon, France. So the idea was same again. So patient is there, ये shoulder pain के patient थे सारे जो data set था. And the system was able to detect कि यहाँ पर एक smiley नजर आ रहा है. So when there is a pain on the patient face, ये smiley change हो जाता है. So it tells there is a problem or a pain in a patient. So again, there is no need of attendant all the time. So system can look at the patient and alarm central system कि यहाँ पर कोई issue है, the doctor can attend. अच्छा, ये अभी मैं इससे बात करूँगा because this is what we are doing, breast cancer analysis. इस पे कुछ results हैं I can show at the end. Skin lesion detection, gait analysis, cardiomegaly. So these are few examples जहाँ पर machine learning and deep learning system are used these days. Okay. अच्छा, how many of you how AI works? ये कुछ slides हैं मेरे पास because I want to show कि ये कोई जादू नहीं है, this is just mathematics. How many of you know कि कुछ लोगों को तो पता है, जो ML वाले बाकियों को पता है? या आज की कोई टॉक में तो जिक्र हुआ है कि ये ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होता है? Okay, so I'll be very quick, very brief क्योंकि आप लोगों की शायद डोमेन नहीं है, but it's very interesting to know कि ये हो क्या रहा है, decisions का intelligence आ कहाँ से रही है? Okay, so इसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए how humans learn.
मैंने यहाँ पे एक इमेज है बच्चे की और कुछ स्मॉल कार्ड्स नजर आ रही हैं आपको. एक्सपीरियंस को हम डेटा कहते हैं साइंस में. दैट्स इट. जो हम कह रहे हैं लर्निंग फ्रॉम डेटा, वो क्या है? हमने बच्चे को कभी नहीं बताया कि ये कार्ड जो ये स्मॉल कार्ड्स हैं इसको अगर मैं पीछे करूँगा पुल करूँगा तो ये फॉरवर्ड होगी. मैंने ये भी नहीं बताया कि यू कैन ओपन द डोर ऑफ द कार. इवन आई हैवंट टोल्ड कि ये जो व्हील्स हैं ये मूव होते हैं. बट इफ यू गिव द टॉय टू अ किड, आफ्टर कपल ऑफ आवर्स द किड इज प्लेइंग. कैसे? विद एक्सपीरियंस, विद डेटा. और वो कितना है? ओह सॉरी, आई टेक्स इमेज एवरी 200 मिलीसेकंड. एवरी 200 मिलीसेकंड. एक सेकंड में कितने इमेजेस हो गए? एंड दे मल्टीप्लाइड विद 60 1 मिनट में. और अगर उस बच्चे ने 10 मिनट तक उस टॉय के साथ खेला तो कितने इमेजेस हो गए? मे बी 400,000-500,000, 4-5 लाख इमेजेस उसके ब्रेन में चले गए. तो दैट इज द डेटा वी गेट एवरी डे. हम मशीन लर्निंग की बात करें कि मेरा डेटा सेट में 10,000 इमेजेस में बड़े खुश होते हैं मेडिकल इमेजेस में. लेकिन ह्यूमन तो ट्रेन में कितने में मिलियंस ऑफ इमेजेस पे हमारा ब्रेन ट्रेन होता है, जो न्यूरल नेटवर्क हमारा ट्रेन हो रहा होता है. सो वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. इसी चीज को हम मशीन लर्निंग में इम्यूलेट करते हैं. सो इन ट्रेडिशनल सीएस इफ यू आर गिवन अ प्रॉब्लम, आपको डेटा दिया जाता है एंड लेट्स से अगर आपने 5 नंबर्स का मीन लेना है, सो यू ऑलरेडी नो द एल्गोरिथम. सो 5 नंबर्स आर देयर, आपको पता है कि 5 को प्लस किया डिवाइड बाय 5 यू गेट द मीन. सो यू नो द प्रोग्राम. मशीन लर्निंग में क्या प्रॉब्लम है? यू हैव द डेटा बट यू डोंट नो कि ये प्रोग्राम क्या होगा. लेट्स से यहाँ पे मैंने चेस्ट एक्सरे के लिखा हुआ, हमने एक निमोनिया डिटेक्शन का प्रॉब्लम एक दफा प्रोजेक्ट किया था जब कोविड हुआ था. तो हमारे पास चेस्ट एक्सरेज हैं बट वी डोंट नो कि कोविड के पेशेंट में क्या मैं इसको किस तरह से एनालाइज करूँ. लेकिन डेटा इज एनोटेटेड, ये सभी बात कर रहे थे. सो वी गेट द डेटा 20,000 एक्सरेज और हर इमेज के साथ एक आउटपुट गिवन है. सो डेटा ये एक्स के ऊपर मैंने वेक्टर डाला हुआ, सो डेटा इज नंबर्स. सो ये बहुत सारे नंबर्स हैं और ये नंबर्स बताता हूँ कहाँ से आ रहे हैं. एंड यू नो द एग्जैक्ट आउटपुट. सो फॉर दिस इज नॉर्मल. लेट्स से सो डेटा नॉर्मल इज 0, if there is something is 1. That's all. You pass it to a machine learning system, it gives you program. So जो ट्रेडिशनल सेंस में जो प्रोग्राम हमारा इनपुट होता है, हमें पता होता है क्या होना है. मशीन लर्निंग में दैट इज द आउटपुट ऑफ अ मशीन लर्निंग सिस्टम. बिकॉज यूजिंग दैट प्रोग्राम नाउ यू कैन प्रेडिक्ट. अगर मुझे ये पता चल जाए तो देन आई कैन डू दिस वन. राइट. सो ये पूरी साइकिल है. इट इज फ्लिप्ड लाइक दिस. ये मशीन लर्निंग का सिस्टम है. सो इसमें एक ट्रेनिंग फेज है, एक टेस्ट फेज है. ट्रेनिंग में जो गिव डेटा, ये सुपरवाइज लर्निंग की. वैसे यहाँ पे मशीन लर्निंग की तो स्टूडेंट नहीं है ना, सो आपको सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई डोंट गो इनटू दिस. तो ये सुपरवाइज लर्निंग है. ठीक है. ओके. सुपरवाइज का मतलब ये कि एनोटेशन है. अगर एनोटेशन नहीं होगी तो अनसुपरवाइज का प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है. सो वी हैव द डेटा, वी हैव द एनोटेशंस. हमने ट्रेन किया सिस्टम को. We get this program which is f of x, that is a mathematical function. F of x means it's a mathematical function. So I pass this x to this function and I get the output at the test. So जो सारी computations है, it is done over here. हम कहते हैं ना मशीन लर्निंग के सिस्टम को 1 हफ्ते लगा ट्रेनिंग में, या LLM को आजकल चैट जीपीटी को कितना टाइम लगा था? किसी ने पढ़ा है उसकी? सिद्रा बताएंगे. सिद्रा कितना टाइम लगा था? आजकल जो लामा बिल्कुल लेटेस्ट है, जो आपके व्हाट्सएप में भी है. सबके पास क्या इम्पैक्ट हो चुका होगा. एक लामा इज द लेटेस्ट वन और फ्रीली अवेलेबल है. इसके प्रॉम्प्ट अगर आप इमेजिन करके लिखेंगे तो इट कैन जनरेट इमेजेस एंड स्टफ और एनिमेट भी कर देगा. इट्स वेरी पावरफुल. एनीवे, सो इट कैन टेक्स मंथ्स, इट कैन टेक ईयर्स, क्योंकि इसमें कुछ बिलियन पैरामीटर्स होते हैं जो ट्रेन हो रहे होते हैं. बट वंस दिस इज डन, वंस यू नो दिस थिंग, दिस इज कॉन्स्टेंट टाइम. दिस इज डन इन अ फ्लैश, क्योंकि हमने सिर्फ डेटा को पास करना है उस मैथमेटिकल फंक्शन से एंड यू गेट द प्रेडिक्शन. सो एवरीथिंग हैपेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम. ठीक है. सो दिस इज द साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग. अच्छा, जो मशीन लर्निंग में कुछ मैंने क्लासिफायर्स के नाम लिखे हुए हैं जो शायद आप लोगों ने सुने हो. अभी इस पर बात करते हैं. ओके. सो योर डेटा एंड योर आउटपुट, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हुआ करते थे पहले. आई एम जस्ट स्किपिंग इट. रैंडम फॉरेस्ट, ये दीज आर नेम्स ऑफ सम मशीन लर्निंग सिस्टम. आजकल जो ज़्यादा बात हो रही है वो सिर्फ इसकी बात हो रही है, लेकिन बाकी भी दे आर वेरी यूजफुल इफ योर डेटा इज नॉट लार्ज इन नंबर्स, तो देन यू कैन गो टुवर्ड्स द अदर वन. और एट द आउटपुट हमें एक एफ ऑफ एक्स मिल रहा होता है.
that can perform these tasks. जो हम सारे का visual recognition is computer vision, NLP is natural language processing, speech recognition, predict stock price, horse price, disease prediction, everything. So that output, that f of x does this all of this stuff. Okay, so artificial neural network जो deep learning का base है, ठीक है, जो बार-बार हम बात कर रहे हैं deep learning is artificial neural network and that is inspired by human brain. ठीक है, मैं this time I'll be a bit quick क्योंकि time कम है. And our brain is center for all this stuff: perception, cognition, emotion, behavior. ठीक है, आप लोगों को शायद मुझसे ज़्यादा पता होगा, so I'm skipping it. And brain is a combination of 100 billion neurons. जो मैंने आपको शुरू में इमेज भी दिखाई थी, और इनका सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं. सो दे आर मोर देन 100 ट्रिलियन कनेक्शंस. अभी भी जो हम डीप लर्निंग की बात करते हैं वो इतना डीप नहीं है. अभी भी जो लामा की बात कर रहे हैं उसमें इतने बिलियन न्यूरॉन्स नहीं है. ठीक है, मैं आई शो यू कि उसकी इमेज किस तरह की होती है. बट यू ट्राई टू थिंक अबाउट द स्केल ऑफ ब्रेन जो अल्लाह ताला ने हमें एक चीज़ दी है. The cognitive gadget is something that we even don't understand these days. कि इतना कुछ करने के बाद भी हम कहते हैं 10% ही पता है कि ब्रेन में क्या है. So this is a neuron जिसमें आपके पास ये dendritic tree है. So data comes at these dendrites. Soma is the nucleus. It sums up all the data. यहाँ पर electrical signals आ रहे थे. I don't know ये medical वाले, तो please forgive me अगर मैं कोई गलत बता रहा हूँ. ठीक है. So if that sum is greater than some threshold, we say that neuron is firing, otherwise neurons remain inhibited. So this is what we emulate in machine learning or artificial neural network as well. This is how we do it. ये artificial neuron इस image को, जो ये वाला image है आपका, this is biological neuron and this is artificial neuron. So we are almost there. We're trying to just mimic what is happening in neuron. Again, ये dendritic tree है. So data is coming. That is multiplied with the weight. Weight का मतलब है कि how much strongly it is connected. अगर weak connection होगा तो weight कम होगा, strong connected होगा तो weight ज़्यादा होगा. Then you sum up कि nucleus है, soma है, and based on some threshold we say either this is firing or not. Same, everything is same. जो biological neuron में हो रहा है, artificial neuron में we mimic everything. So step 1 was synaptic connections, collection of inputs, and then decision. So decision is firing. ठीक है, 0 or 1. So if it is excited, we say 1. If it is 0, we say inhibited. The neuron is not firing. And based on that, we can predict something. जो अभी तक इसको अगर मैं easy करके समझूं तो अगर आपने एक cat की image दी है, so if it fires, we say it is cat. If it doesn't fire, we say it's not cat. 0, 1. Simply it's a binary classification problem. Okay, I'm just skipping it. So एक न्यूरॉन आपको मैंने दिखाया था. So deep learning में it's a combination of neurons. Multiple neurons are there. Input layer है आपके पास, hidden layer. These are all neurons जो perceptron कह रहे थे, and they are all connected together like in our brain. Neurons are connected, and all of this comes to this activation. And if it is 1, we say decision is this. If it is not, we say decision is this. So this is what happens. जो सारी decision making है उस तरह से हो रही है आपकी 0 1. ठीक है, this is your input. Okay, I am skipping it. ये जो मैंने आपको दिखाया था that is perceptron. Perceptron का सिर्फ एक मसला है जो आपको कहता है 2010 से पहले हमें ये नहीं पता था कि ये इतने सारे इसके डेरिवेटिव्स कैसे लेंगे, क्योंकि perceptron में एक्टिवेशन फंक्शन, स्टेप फंक्शन जो साइंस वाले हैं, एंड दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएशन का नाम सुना है? अगर नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, मत परेशान हो. एक्चुअली इस प्रेजेंटेशन में मकसद ये कि वी शुड ऑल कम टुगेदर, क्योंकि कुछ साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ मेडिकल साइंस के हैं. सो ठीक है, later on we mimic this step function with this function, sigmoid function, and this is differentiable. And in 2010 we understand कि ये पूरा न्यूरल नेटवर्क कैसे कर सकते हैं. जो डीप लर्निंग का आपका पूरा आर्किटेक्चर है, पेपर 2011 का है. That comes from Jean Lecun, a French scientist who is research head of Meta at the moment. ये जो डीप लर्निंग का पहला पेपर है. Okay, so I'm skipping it at the moment. Okay, so जो अभी तक हम बात कर रहे थे, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन में I'm just focusing on images. So what is an image? थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि इमेज होता क्या है. तो यहाँ पर आपको एक एक्सरे नजर आ रहे हैं.
and we say it's just a mathematical function. For us, image is a function. ये मैं image को 3D में rotate कर रहा हूँ. ये same image है X-ray का, आपको इसमें कुछ correspondence नजर आ रही है? जहाँ पर black है वो valleys हैं, जहाँ पर white है वहाँ पे आपको peak नजर आ रही है. और ये भी मैं 3D में दिखा रहा हूँ. अगर मैं 1D में स्कैन लूंगा तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन नजर आएगा. वो एक होती है ना शेप. So image is a mathematical function, nothing else for us. Radiologists होंगे तो उनसे माजरत क्योंकि वो image कुछ और समझते हैं. But for engineers this is just a mathematical function. So we can perform everything जो हम mathematical function के साथ कर सकते हैं. Add, subtract, multiply, derivative, anything we can do in function we can do on image. Okay. Image is a set of numbers. ठीक है, ये मैंने zoom करता चला गया हूँ. आपको एक नज़र आ रहा है इसमें ये box. मैं इसको zoom कर रहा हूँ. It's a grey level image, so 0 से 255 के कुछ numbers हैं. So this is what machine sees. Machine को ये नज़र नहीं आ रहा. Machine को या machine learning system को ये नज़र आ रहा. So from that we extract some features. Images can be in color. Color में RGB का नाम सुना होगा. इसके अलावा भी कुछ color spaces हैं, but RGB में red, green, blue channel है. Not going into detail again. ये एक इमेज है जो कलर में, इसमें आपको हर पिक्सल के अगेंस्ट 3 नंबर नजर आ रहे हैं. So there is a red, there is a green, there is a blue. So that makes a color image. And again, machine learning system sees these colors or these numbers, nothing else. So it's just intensity. Yes, it's intensity, exactly. Okay, so the purpose of producing image of body part. So this is medical image. Medical imaging, we all know why we produce it. क्योंकि हम उसमें intricacies को देखना चाह रहे हैं अपने body parts के. इसमें कौन-कौन सी modalities हो सकती हैं? ये X-rays, MRIs, ultrasounds, endoscopic images, CT scans, PET scans, and so on and so forth. और भी हो सकती हैं. So these are usually we see in different projects. Again, ये हो चुका है. I'm just skipping you. Sir, how much time do I have? अभी तो आते हैं. Okay, I'll be quick. So before applying medical image, okay. So these are I'm just skipping. मैं आपको कुछ results दिखा दूँ. So before giving this image data to machine learning system, we pre-process the data. तो डेटा में कुछ आपके noise हो सकती है, कुछ और problems हो सकते हैं. We remove it and then we apply that. Okay, ये important है. This is So this is complete machine learning system that uses medical data and gives decisions. So first is you have lot of data that is given by the hospital. Then you extract some features, that is the domain knowledge. जहाँ पर we need knowledge of an expert. We don't have that knowledge. क्योंकि हमारे पास सिर्फ numbers आ रहे हैं. From those numbers we extract some features. और उन features में we select the one that are useful one. And then those features are given to a neural network or deep learning अगर आप कह रहे हैं, and that deep learning gives you some result. So जो अगर आपका data is like you want to say कि इस X-ray में COVID या pneumonia है या नहीं, so then here you will get the probability of having pneumonia is that much. So these are 4 or 5 steps basically that we perform, and the your system gets the decision. Okay, so ये कुछ research projects के मैं आपको So this is the project we did on breast cancer analysis. Again, इसमें हमने deep learning का एक special model था that we proposed. We extracted some features, domain knowledge को भी infuse किया. We merged those two features, and based on that we say whether this mammogram has a malignancy or it's benign. इसके कुछ results हैं. So this is one. अच्छा I'm going bit quick. Again ये preprint में है. अच्छा आप लोगों को XA का पता है, एक्सप्लेनेबल डीप लर्निंग का प्रॉब्लम है. इसको हम कहते हैं कि इट्स अ ब्लैक बॉक्स. ये ब्लैक बॉक्स बना हुआ भी है. वी डोंट नो. हम इसको एक डेटा देते हैं एंड इट्स गिव अस द डिसीजन. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ब्लैक बॉक्स, दिस इज द मेजर हर्डल जहां पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मशीन लर्निंग को यूज नहीं करते, बिकॉज इससे हमें पता ही नहीं कि डिसीजन क्यों आ रहा है. टू मेक दिस ब्लैक बॉक्स इनटू अ व्हाइट बॉक्स या ट्रांसपेरेंट, वी यूज समथिंग कॉल्ड एक्सप्लेनेबल AI. So we explain the decision whether it's a malignant or benign, how we can say this is malignant. तो यहाँ पर कुछ ये preprint में रिसर्च हमारा, तो यहाँ पर हमने कुछ XA की टेक्निक यूज की थी. These are convolution neural network results and so on. These are results on mammograms. तो ये हमारा डेटा था mammograms का. ये इसका ग्राउंड ट्रूथ है जहाँ पर
बेसिकली ये रेडियोलॉजिस्ट ने ROI इसकी दी हुई है कि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट शुड बी लुक्ड इधर इस रीजन में ये कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है कुछ और भी हो सकता है राइट एंड दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ सम एक्सप्लेनेबल मॉडल सो वी यूज्ड ग्रेडकैम लाइन शैप जो 3 बहुत ज़्यादा यूज होते हैं मॉडल आजकल एंड वी डिड सम एवोल्यूशन कि कौन सा इनमें बेहतर है so this is in preprint probably it will be published soon. This is we did on autism spectrum disorder using MRI images. Wichelsson scheme का पता है किसी को ब्रेन के सेंटर में होती है उसे कहते हैं कॉर्पस कोलिसम अगर कोई मेडिकल केस बिल्कुल बीच में होता है इसको आप फियर सेंटर भी कहते हैं उसकी कुछ डिवीजन होती है 7 जिसको हम कहते हैं विचेल्सन स्कीम ये यहाँ पर 7 कलर नजर आ रहे हैं तो वी डोंट नो कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोमार्कर है टू प्रेडिक्ट ऑटिज्म So based on that, we did some research. इसके कुछ results हैं. इसके कुछ results हैं, so I'm just skipping it because shortage of time. Okay, pneumonia detection. We use GANs. I think I'm just skipping it. These are few collaborators जिनके साथ मैंने काम किया है. जिनमें से एक सिद्धार्थ यहाँ पर हैंगी. So we are working on that. And just one last step. And then I'll finish. Just one last video. Is the symbiotic relationship between the human and machine that brings the magic of AI to medicine in a meaningful way. Now we have the tools to make a huge difference to human life. Cancer research is increasingly powered by data. Those data remain siloed across institutions. We're creating a data ecosystem that allows people to share data and making sure that we're doing that in a way that still maintains the privacy of the patients. With the power of AI, we can go after the unknown. And I can guarantee that we'll find something that nobody expected. Side effect death syndrome scares every mother and father, and it is a problem. We have to change. The collaborations Microsoft AI for Health will help to start this next step of our discovery. Our data show very convincingly clear correlation between smoking and SIDS. And just changing behavior can save children's lives. You cannot measure the benefit of that. It's a sad day when the patient comes in and I can't impact them. Through AI for Health, we will be building an AI solution that can autonomously diagnose diabetic retinopathy. With the portable camera, I can take healthcare to the patients who would not be able to come to us. She can look right here. Going forward, we can address the 500 million patients that are out there and disrupt this disease. AI for Health and IRIS together can have that impact. Today, there are 200,000 leprosy patients diagnosed every year. If you catch it in the stage of a skin lesion, you can cure the person. We are teaching an AI algorithm to recognize leprosy in an image of a skin lesion. With AI, we can help patients help themselves to get to the right experts at the right time. If you can help a child to not lose their fingers, that means everything. Innovation comes from bringing different perspectives together. And what an amazing partnership this is for all of us. When you see that you can make a big impact on somebody's life, that's the greatest thing ever. We can help eliminate the oldest disease known to man that made history. That's how we want to contribute to the world. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, so we can have questions offline if you have anything because I am over the